everyone, welcome back to my channel, My Musings. I am Purnima and if you're new to my channel then please आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करते हुए चले जाना. It is not going to cost you any penny but of course it's going to make my day. And if you're already my subscriber then thank you so very much for supporting me and watching my videos so far. एंड इफ़ यू ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता होगा कि लास्ट मंथ पीहू का बर्थडे था. सो इन केस यू डोंट नो, पीहू इज़ माई 3-year-old डॉटर. सो उस टाइम पे हम लोग पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. सो इट्स नॉट अ वेरी लैविश अफेयर. हम लोग जस्ट इट्स अ स्मॉल फैमिली गैदरिंग बिकॉज ऑफ कोर्स वी डू नॉट वॉन्ट so much people coming in and gathering. So it's just like, you know, nani nanu, dadi dadu, masi and bua coming at our place today and we will be like cutting her cake because like every 3-year-old kid she also loves gifts, she also loves toys, cakes. तो हमने सोचा थोड़ा सा celebration कर लेते हैं for her enjoyment and it's like अभी शाम का टाइम है and people will be coming in just another few hours. And I was getting ready, so मैंने सोचा just why not film it and you know get ready with you guys. And मेरा जो look है of course बहुत ज़्यादा कोई heavy party look नहीं है. It's a simple go to party look that anybody can recreate. So again a very good look that any beginner basically can carry और इसीलिए मैं इसको film भी करूँगी. एंड स्टे ट्यून क्योंकि लास्ट में मैं सारी बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियोस और फोटोज़ भी शेयर करूँगी. सो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पीहूज 3rd बर्थडे सेलिब्रेशंस सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so let's get ready. So हमेशा की तरह मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है. एंड बिफोर आई स्टार्ट माई मेकअप आई हैव टू अप्लाई माई प्राइमर. दिस इज़ नाइका's Prep Me Up प्राइमर because this is very important for that smooth base and you know the flawless makeup because आपको अपने pores cover up करने होते हैं. So I will apply the primer first. Now let's move on to the foundation. I'm again using my favorite Maybelline Fit Me foundation and I'm going to apply it on my face and do not forget the neck area. Now blend करने के लिए मैं use करूँगी ये foundation brush and I'm going to simply blend it. Now let's move on to the concealer. Now I'm going to conceal all the darker areas under my eyes, nose और forehead या जो भी areas मुझे basically highlight करने हैं उनको मैं conceal कर लूँगी. Also I use the concealer on my eyelids that acts as a base for my eye makeup. And again I'm going to use the same brush and blend it. Now after the concealer, let's move on to the eyebrows. Now for eyebrows, I'm going to use this brow palette from Freedom. And to fill up my eyebrows, I'm using this angular brush. Now I'm going to simply fill my eyebrows और जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि शेप देनी है मैं वहाँ शेप दे दूँगी. जहाँ पे मुझे गैप्स लगेंगे मैं उसको फिल कर दूँगी. Now let's move on to the contouring part. Now for this I'm going to use Nykaa's contour palette and with the help of a brush I'm going to contour my cheekbones, my nose, my jawline and my forehead. मैं सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो इन केस यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग प्लीज़ आप जाके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिंक्स अवेलेबल हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप. इट्स वेरी सिंपल क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है पार्टी अटेंड करने के लिए तो मैं बहुत ही यू नो सिंपल सा और थोड़ा बीमी शाइनी सा पार्टी लुक कर रही हूँ इस टाइम पे. नाउ
Now for that I am using this beautiful palette by Huda Beauty. इसमें से मैं ये वाला pinkish purplish सा shimmery shade लूँगी because my outfit is also in pink shade. And for this look I'm not going to use any brush, I'm just using my fingers. Now I will take this shade on my finger and apply on the whole eyelid like this. Now after applying the pink shade on both my eyelids, I am going to take my kajal and मैं इसको अपनी upper lash line पे लगा लूँगी randomly. You don't have to apply it very neatly or perfectly. इसको आप randomly अपनी upper eye lash line पे लगा लो. Now to give my eye a soft smoky effect, what I'm going to do is I'm going to smudge this liner with the help of my finger. Now this is a very easy soft smoky look जो कि बहुत low key parties में बहुत सुंदर लगती है because it's not very heavy, plus आपकी eyes को ये थोड़ा सा glam effect देती है. So I'm going to use my finger and smudge the eyeliner. Now I'm going to apply a thick line of kajal on my lower lash line also. And of course to complete the eye look I have to apply my mascara. Now this is again by Maybelline ka Voluminous Waterproof Mascara. Now let's move on to the blush. I'm using this blush by Faces Canada. Now for highlighter, I'm going to use this palette by The Balm Cosmetics, and this is a very beautiful palette that has a bronzer, highlighter and a blush. Look at this sheen. I totally love this highlighter. Now for lips, first of all लिपस्टिक से पहले मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम, क्योंकि ये वाला जो सीज़न होता है अर्ली विंटर्स वाला, उसमें मेरे को चैप लिप्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. एंड पीछे थोड़े दिन पहले मेरे को बहुत ज़्यादा चैप लिप्स की प्रॉब्लम हो रही थी. एंड आई यूज़ दिस लिप बाम बाय लोटस एंड आई किड यू नॉट, दिस इज़ सच अ गुड लिप बाम. आई टोटली रिकमेंड यू. अगर आपको चैप लिप्स की प्रॉब्लम है, please go for this. This is tried and tested by me. This is a very good lip balm. मेरे चैप लिप्स इसको यूज़ करने से 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए थे. So I have to moisturize my lips in winters. So before my lipstick, I am going to apply my lip balm. And now for lipstick, I am using this gorgeous pink shade from Estee Lauder. Now my lipstick is almost finished, so I am using this brush to apply it on my lips. Now since I'm doing a shiny look, I am going to top my lipstick with this beautiful coat by Sugar Cosmetics for that perfect shine on my lips also. And yeah, now let me set my makeup with this Maybelline setting spray. And yeah, I am ready for the party. Alright, so just give me 1 minute and I will complete my look with the perfect accessories. Alright, so I'm wearing these beautiful heart-shaped stud earrings from Shein, and मेरी dress भी Shein से ही है, in case you're wondering. And I'm completing my look with my watch, which is again matching my outfit. And yes, this is it. And yeah, I am done and I'm ready for the party. And I think it just took 15-20 minutes for me to get ready, and I'm totally loving how the makeup has turned out to be. Alright, I am ready. So this is the very easy party look जो मैंने करी है, क्योंकि obviously घर पे ही celebrations है, मुझे बहुत ज़्यादा elaborate party makeup look carry भी नहीं करना था. And I think it's a very useful guide for beginners also. Easy and very
glam and easy. And yeah, everybody is just about to come now, so party is going to begin and I will be making all of you the part of it, so stay tuned because iske baad we will join Pihu's third birthday celebrations.